250 पे कैसे एक एसआईपी शुरू कर सकें? वो 40% वाली एसआईपी है क्या? और 10 साल के एसआईपी रिटर्न आधे से ज्यादा कम हो गए थे। अग्नि परीक्षा का समय था, कोई भी निवेशक निराश हो जाता। तो I'm sure कि आप सबको SIP के बारे में पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि SIF क्या है? SIF is Specialized Investment Fund. So are they better than SIPs? How do they work? And क्या आपको SIX में इन्वेस्ट करना चाहिए? Watch the video in this video to find out. So this is a new category of mutual fund which was introduced by SEBI, which allows for a more flexible investment strategy across equity, debt, and hybrid asset classes compared with the traditional mutual funds. Now, SIF specially designed किए गए हैं high net worth individuals, institutions या फिर qualified investors के, और इनका मेन फोकस है flexibility, diversification और niche market exposure. So let's look at how SIFs actually work. तो SIFs are pooled investment structure, यानी इन्वेस्टर्स का पैसा एक फंड में जमा हो जाता है जिसे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैंडल करेगा, और ये आपके फंड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे कि पैसा किस एसेट क्लास, इंडस्ट्री या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए. So now when we say that SIFs are a new category of mutual fund, the natural question that comes up is that how is it different from a regular mutual fund? So SIFs offer greater flexibility in investment strategies. They use short selling and more active derivative positions, but within the defined limits. Now they also have a minimum investment threshold, which is 10 lakh rupees. So comparatively, regular mutual funds के standardized strategies होते हैं और उनके minimum investment amounts के काफी low होते हैं. So can you invest in SIFs? SIFs के लिए minimum investment है 10 lakh rupees और इसके लिए KYC, risk profiling भी जरूरी है. SIFs also provide disclosures on the portfolio, liquidity risk, and scenario analysis on their websites. So how are SIFs beneficial? जैसे कि मैंने पहले कहा, SIFs allow a mix of equity, debt, and hybrid asset classes. This offers more flexibility to the investors. But at the same time, SIFs SEBI के regulations के साथ complied है. मतलब इन्वेस्टर का पैसा completely secure और safe है. इससे आपको इंक्रीज डिवर्सिफिकेशन मिलता है जो कि आपको डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करेगा. So now let's understand SIP versus SIF, which is better. Of course, for SIPs you can start investing right from 500 rupees, and this is a beginner-friendly investment product and allows you to keep your money safe and regular. ये आपको एक रेगुलर डिसिप्लिन सेविंग हैबिट डेवलप करने में मदद करता है. As the name suggests, it's systematic investment plan. Now let's look at SIFs. So ये retail, high net worth and institutional investors के investment needs को meet करने के लिए बनाया गया है. इसमें customized strategies है, niche markets है, ताकि ये HNI के requirements को cater कर पाए. With an acceptable amount of risk, ये HNIs को अच्छे returns भी offer करता है. So SIP or SIF, at the end of the day, you have to decide which investment product chooses best according to your investment goals. And to make finance terms more simpler will always be good at Simple Health.